हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सा इस बार डिले हो गया वीडियो लाने में बिकॉज आई हैड सम इम्पॉर्टेंट फिश टू फ्राई and so sincere apology for that. Now in this video we will talk about very important topic of 12th century 20th century, I beg your pardon, and that is disintegration of USSR. Very important topic in the context of your examination, and I'm talking about 12th class. ये अब क्या है सोवियत यूनियन, और I mean this is quite an amazing thing and very curious thing to know that a union, a kind of empire which was giving America run for its money during the Cold War, how come it fell down? How come it disintegrated? And how come it got collapsed? I mean, you can use any number of adjectives, but that's not the relevance thing here. The relevance thing is कि हमें ये जानना है कि एक ऐसा कंट्री और यूनियन जो अमेरिका को कंपटीशन दे रहा था, चैलेंजिंग अमेरिका इन डिफरेंट वेज, और all of sudden, and not all of sudden, what went wrong in that system or in that country that it got collapsed and could not compete with America. तो इसके बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटिंग अगेन. बट जैसे कोई व्यक्ति की जिसकी डेथ होती है, जो उसको डेथ से जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज एंड शी वॉज. हमें सोवियत सिस्टम को भी जानना पड़ेगा कि वो किस तरीके का कंट्री था, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इट वॉज, बिकॉज द रीजन फॉर इट्स कोलैप्स and region for its disintegration will come out from the system itself. ठीक है, तो हमें उसको जानना है, and then we will move on to the disintegration part. फिर हम गोरबाचेव की भी बात करेंगे, then we will talk about the outcome of the disintegration. So it may be a bit long video, but I guess I will sum up each and everything for you. तो इसको ध्यान में रखते हैं हम. Now let's move on. तो एज आई सेड सोवियत सिस्टम. अब सोवियत सिस्टम इस्टेब्लिश कब हुआ? इट गॉट इस्टेब्लिश्ड इन 1917. याद रखेंगे आप, आई एम जस्ट मेंशनिंग द ईयर हियर. 1917 में इस्टेब्लिश हुआ था. अगर आपको याद ना हो तो लेट मी रिमाइंड यू, इन 1917 रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस. आप 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक में जाके पढ़ सकते हैं. रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस. यू कैन रिकॉल Bolshevik and Menshevik, and there was a one man who led that movement and that revolution, his name was Lenin. आप उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा और जानिए, बट इन 12th क्लास यू आर नॉट सपोज टू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट मूवमेंट और ऑफ दैट रेवोल्यूशन. You need to focus कि where it got established. As I said 1917 में, वहीं से इसको ये नाम मिला, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. सोवियत का मतलब क्या होता है? सोवियत, द मीनिंग ऑफ सोवियत इज अ काइंड ऑफ काउंसिल, अ पॉलिटिकल काउंसिल. तो यूनियन ऑफ सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक. सोशलिस्ट याद करो 11th का, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म. यू मस्ट हैव स्टडीड इन 11th क्लास, एंड इफ यू हैव नॉट देन आई विल डेफिनेटली I will let you know the meaning of socialism and what kind of system it was. तो अब 1917 में आया, near about, I mean 15 sub nationals were there. और एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, before you will read about the system and how it got collapsed, I think it is incumbent upon you to just observe the Soviet Union map for a while. ठीक है, आप बिफोर ऑब्जर्विंग एंड बिफोर लोकेटिंग ऑल दोज 15 यूनियंस, मैं मेंशन कर दे रहा हूं इसमें टोटल कितने यूनियंस थे, 15. ठीक है, बिफोर ऑब्जर्विंग ऑल दोज 15 unions, it won't be right for you to just read about it, because as you know that in 12th class 5 marks question come which are related to map. Okay, so if you will be able to locate them, it may help you in the examination. सबके बारे में पता होना चाहिए आपको कि where they are and which part of the world they are. ये सब आपको एक आइडिया होना चाहिए. Geographical location you should have the idea about it. Then let's talk about the political and Soviet system. In fact, और उसमें हम बात करेंगे सोवियत सिस्टम में पॉलिटिकल की एंड इकोनॉमिक की. पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था उसका? As you know, in Soviet or in socialist republic, or wherever there is a socialism, what happens? Socialism है क्या? Socialism talks about
centralization of power. Socialism talks about when equality in the society. It tells you that capitalism has no place, like market will not rule the society, will not rule anything, government will decide everything, and that's why political and economic system will play around the same thing, that is socialism. अब इसको ध्यान में रखेंगे हम. पॉलिटिकल सिस्टम सबसे पहला वन पार्टी रूल. इट वाज नॉट लाइक इंडिया जहां पे हजारों पार्टियां हैं. आई मीन आप उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते. वन पार्टी रूल. और कौन सा पार्टी? वन एंड ओनली, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ऑब्वियसली सोवियत यूनियन, वो पार्टी वहां पे रूल कर रहा था. एंड दैट वाज द ओनली. किसी भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री में यू विल फाइंड दैट काइंड ऑफ पार्टी विच इज रूलिंग. नो अदर पार्टी विल बी अलाउड. And please tell me in the comment section that which is the other country in current time which has the communist party and the only one party is prominent in that country. Okay, please do let me know. And that country is somehow following the older Russian and you would say Soviet system. तो one party rule, no place for other party. ठीक है, तो आप इसको डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं कह सकते. इट वॉजंट अ डेमोक्रेसी एट ऑल. नाउ मूविंग ऑन, प्राइमेसी ऑफ स्टेट. एज आई सेड कि इन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सिस्टम क्या होता है, स्टेट विल डिसाइड एवरीथिंग. what you will produce, how much you will produce, what kind of school will be there, I mean what kind of hospital will be there, what kind of transportation system will be there. Everything will be decided by the state. Market will not determine anything. And that's why this is another feature, political feature of our Soviet system. आगे बढ़ते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. इंडिया में क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर राइट नाउ. ठीक है, in Soviet system it was a centralization of power. Everything will be run from capital of the country, right? Capital से सब कुछ run किया जाएगा. Nothing will be power will not be delegated to others. Power delegate नहीं किया जाएगा. And everything will be decided by a कोटरी ऑफ पीपल और सम ग्रुप ऑफ पीपल. बस वही लोग डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर द कंट्री. एंड दैट इज नोन एज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. एंड अपोजिट क्या है इसका? डिसेंट्रलाइजेशन. अब इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं. उसकी इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? सबसे पहले प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी. आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है. इंडिया में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और आपको 12th में भी पढ़ाया गया है और आप पढ़ेंगे कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था जिसको नाम चेंज करके अब नीति आयोग कर दिया गया है. एंड 5-year प्लान जो लेकर आए हम, दैट वाज बोरोड फ्रॉम सोवियत यूनियन इटसेल्फ. तो उसकी बिगनिंग कहां पे हुई? प्लान्ड इकोनॉमी की. एवरीथिंग वाज प्लान्ड. 5-year प्लान विल बी वाज स्टार्टेड फ्रॉम देयर 1928 ऑनवर्ड्स. और वहीं से बाकी कंट्री ने भी बोरो किया इंक्लूडिंग इंडिया. तो प्लान्ड इकोनॉमी था वेयर एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन एडवांस कि वेयर दे विल स्पेंड द मनी, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विल टेक प्लेस एंड हाउ दे विल कलेक्ट द टैक्सेस एक्सेट्रा. एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी. एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड. अगेन द सेम थिंग, प्राइमेसी ऑफ स्टेट. एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट. आई मीन ऑल द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है, दैट विल बी लुक्ड आफ्टर बाय स्टेट एंड दे विल डिसाइड हु विल गेट हाउ मच. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था. सब्सिडाइज्ड सिस्टम. अगेन हमारे यहाँ आपने देखा होगा सब्सिडी, बहुत इसके ऊपर विचार होता है. दिल्ली में ये कंट्रोवर्शियल मैटर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन. आपने अगर रिकॉल किया हो कि हाउ मच सब्सिडी कैन अ गवर्नमेंट गिव टू द पीपल. तो इसकी जो बिगिनिंग एंड ऑरिजिन है कहीं ना कहीं वो यहीं से आया है. लोग जो सब्सिडी का मतलब क्या होता है बच्चों? When government come out from its own way and go extra mile to help the people. जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा माइल जाकर गरीब लोगों की हेल्प करते हैं टू ब्रिंग द इक्वालिटी इन द सिस्टम और सोसाइटी, दैट इज नोन एज अ सब्सिडी. यानी कि अगर कोई चीज 50 रुपीज मार्केट में बिक रहा है, गवर्नमेंट विल पे फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट, फ्रॉम इट्स ओन एक्सचेकर एंड फ्रॉम ऑल द टैक्सेस विच इट हैज कलेक्टेड एंड विल मेक श्योर दैट 50 रुपीज स्टॉप विल बी गिवन एट 2 रुपीज और 5 रुपीज और 10 rupees at a very low price so that it can be affordable and accessible even for a poorest of the poor in the country. So through this system they will bring some kind of equality. And welfare system, again welfare system क्या है?
कि there will be a free education, there will be a free healthcare system, right? And so many other free thing will be given. If someone is old and not doing any kind of work, there will be some kind of allowances for those people. तो इसको बोलते हैं welfare system. Again, these are important to bridge the poverty and the gap between rich and poor in a society. इसके लिए जरूरी है. उसके बाद ये closed economy था. It was a closed economy. Closed economy का मतलब क्या है? Everything will be produced in a country, right? No trade. I mean, very minimum you could say a trade will take place, and the country will be dependent on itself, not on others, right? तो उसको बोलते हैं closed economy. It's mentioned in NCERT very categorically. From pin to car, from a small thing to the bigger thing, everything was produced within the Soviet system, so that they will not be dependent on others. तो अभी ये भी एक रीजन बनेगा उसके फेलियर का. And the next one is energy resources. वो किस पे डिपेंडेंट थे अपने इकोनॉमी को रन करने के लिए? वेयर दे वर गेटिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू, ऑयल पे, आयरन, स्टील, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज वर द थिंग्स विच वर हेल्पिंग द सोवियत इकोनॉमी टू ग्रो, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट managed economy in the world. But how come a best managed economy, a good political system which is looking from outside, it is good, but we will get to know why it wasn't so good. Why, I mean, such a solid system politically, economically went haywire? Why it failed? ये क्यों fail हो गया and why it collapsed? Now we will get to know. So बच्चों, as I said कि now we will talk about causes of disintegration. As I said earlier कि एक ऐसा system which was looking very robust and solid from outside, I mean, it means it was very hollow and had so many issues within inside which people could not see. So we will talk about all those problems. And since, I mean, in terms of political system, we talked about the political and economic. That's why causes of disintegration will also be divided in political as well as economic. ठीक है, तो सबसे पहले political causes की बात करते हैं. Let's talk about the political causes now. सबसे पहला, मैंने आप बोला था ना आपको कि जो इंसान अगर किसी की डेथ होती है, यानी कि सोवियत यूनियन का अगर डेथ हुआ, अगर सपोज, तो उसकी डेथ के पीछे उस इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है या इंटरनल या एक्सटर्नल जो होते हैं, दैट कुड बिकम द रीजन. सेम थिंग अप्लाइज टू सोवियत यूनियन एज वेल. इफ इट फेल डाउन एंड गॉट कोलैप्स्ड, then it means the structure which it had must be the reason behind the fall down of the Soviet Union. तो उसी के बारे में है. मैंने बोला था centralization of power, और उस centralization को उन्होंने एक इतने लेवल पे लेके चले गए कि दैट स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम. अब होता क्या है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, बताता हूं. सपोज इफ इन आवर कंट्री एवरीथिंग विल बी रन फ्रॉम दिल्ली, or 700 odd MPs will decide everything for entire country. Do you think that would be a okay kind of thing? That would be appropriate thing to do that? I mean, what kind of problem is happening in my district or in my village? How an MP who is sitting in Delhi and living in Delhi would be able to decide, and how he or she would be able to resolve the problem? And that is the problem of decentralization. Centralization में यही problem होता है कि you are very far away from the problem is occurring, and you are unable to judge the problem and what kind of problem it is. तो वही हुआ, centralization इतना ज़्यादा हो गया कि they were unable to do anything. आगे बढ़ते हैं. लैक ऑफ फ्रीडम. मैंने बोला था ना इससे पहले, सिंस देयर वाज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, obviously it means they did not have democracy, and if they did not have a democracy, this thing will always come into the picture, because in democracy you enjoy a lot of freedom, but the moment there will be no democracy and there will be a diluted form of democracy, this thing will be impacted. तो फ्रीडम नहीं था लोगों को. यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट,
and whatever you will write in the paper, whatever you will air in the television or radio, that will be approved by the government. And if you will write something against the government, there you may penalize for this, you may persecute for this. So that's why that kind of system was prevailing and people were really feeling choked. उनको लग रहा था कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, their voices is being trampled upon, and that's why they were really lacking this thing, and they were really missing this freedom, and that also became the reason they started demanding for freedom. और सिर्फ लोग नहीं, जो उसमें 15 नेशनल सब नेशनल जो थे, they also felt कि they are not enjoying their freedom, they are not enjoying their sovereignty and whatever their uniqueness, and that's why they started demanding for it. और ये एक बहुत बड़ा कारण बना इसके फेलियर का और इसके डिसइंटीग्रेशन का. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. ओपेक सिस्टम. भाई जब when again the democracy, if the democracy will not take place or if there is no democracy, then opaqueness will come into the picture. आपने साइंस में पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंसी का उल्टा ओपेकनेस. ओपेक क्या होता है? when you are not able to see what is happening within the four wall of the government premises. समझ में आ गया? गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है, what kind of law they are bringing, why they are bringing, what is the reason behind it, वो सब जब आपको नहीं पता चलता, that is known as opaqueness, and that's why the system was quite opaque. People had no idea what government was up to, government क्या करने जा रहा है and what is happening there. Lack of accountability, ये भी again everything was related to the democracy. Abhi you can question your own government, you can criticize honorable Prime Minister Narendra Modi, आप उनको criticize कर सकते, but could you do the same thing in Soviet Union at that point in time? The answer is no. They will not tell you why they have made this law, they will not let you know कि why it is needed for this country, what is the need for this. तो ये सब चीजें जब आपको नहीं बताया जाएगा तो इसका मतलब है कि वहां पे accountability नहीं है, उस सिस्टम में accountability नहीं है, और जहां पे accountability नहीं होगा obviously that will have a negative impact on the people, and after certain period of time people will start questioning it, उसको question करने लगेंगे. That's why accountability is very important. हाई लेवल ऑफ करप्शन, हाई लेवल ऑफ करप्शन, हाई लेवल ऑफ करप्शन भी बहुत ज्यादा था वहां पे. करप्शन का लेवल क्यों नहीं होगा करप्शन, जब पता है एक ही पार्टी को चुनाव जीतना है. when I mean the party is aware that they are only going to win the election, when party is aware they do not have any accountability, they decide everything, so obviously then there will be a corruption, and that corruption will be full of impunity, when there is no fear to loot the country and to loot the exchequer, and that was happening. The embezzlement of fund was taking place and there was free for all within the system who was running the country. तो ये एक बहुत बड़ा problem था and people were really upset with that thing. Moving on, highly bureaucratic system. भाई जब नेता काम ना करना चाहे, जब उनको किसी चीज का डर ना हो, तो वो क्या करेंगे, अपना काम किस पे डाल देंगे, सारे ब्यूरोक्रेट्स पे, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उन पे. वही हो रहा था वहां पे. ऑल द वर्क वर डेलीगेटेड एंड वर गिवन टू द ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस वर चिलिंग आउट, वो एकदम बिल्कुल अनकंसर्न थे. एंड व्हेन यू विल डेलीगेट ऑल द वर्क टू द ब्यूरोक्रेट्स, देन व्हाट विल हैपन, ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन, दे नो देयर पोजीशन इज वेरी मच fixed, and they will become quite unconcerned about the problem and the well-being of the common citizen. And that's why this bureaucracy was quite casual in their approach. They were nonchalant and very you would say not interested in the problem of the people. वो उनकी problem में interested ही नहीं थे. They were doing the things that they want on their whims and fancies, and that's why the entire political system was quite rotten, पूरी तरीके से खराब हो चुका था. and with every passing year it was going from bad to worse. तो ये तो हो गए political causes. now we will talk about economic causes. अब economic causes में क्या है, again the Soviet economy had become a stagnant economy. stagnant क्या होता है बच्चों, what is the meaning of stagnant? stagnant मतलब जो रुक गया हो, जो चल ना रहा हो, something which is not moving properly. So in around 1970s or around 1970s or 80s,
the Soviet economy had become a stagnant economy. GDP of the Soviet economy was not moving up. It was somehow going down or was quite, जैसा जितना था उतना ही था. उसके अलावा ना आगे आगे को नहीं बढ़ रहा था जितना बढ़ना चाहिए. And that's why that really somehow summed up the things in a very much manner. आगे बढ़ते हैं तो stagnant economy became the reason कि economy is not flourishing as they were expecting. तभी मैंने कहा कि system was appearing to be a very robust from the outside, but in the internal, when you will go and when you will look into the internal scenario, then you will find out that system was really beset with many problems, right? तो आगे बढ़ते हैं. low quality products. अब लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? वॉट एवर दे वर मैन्युफैक्चरिंग, आपको मैंने बताया था ना सोवियत सिस्टम में कि दे वर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम पिन टू कार, एवरीथिंग वाज मैन्युफैक्चर्ड विद इन सोवियत यूनियन. तो अब जब आपके पास कोई कंपटीशन नहीं होगा, व्हेन गवर्नमेंट विल डिसाइड एवरीथिंग, देन इट्स अ वेरी commercial thing, and anyone who has any idea about economics and business, they know कि when there is a less competition in the market, what will happen? It will impact the products which they will manufacture. The quality will go down because they do not have any fear to compete with anyone, and that's why they were really not getting a good quality products. Inflation, बहुत तेजी से चीजों के दाम बढ़ रहे थे, एंड खास तौर पे उन चीजों के those things which are important for our daily use, right? Like from toothpaste to all those other things जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, खाने पीने की चीज़ों के दाम, उनके दाम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे. The prices of basic things which are important for our survival and livelihood were skyrocketing. It was shooting up. बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Comparison with West. अब हुआ यूं कि there are so many people within Soviet Union and about it, in their national subnationals, they went to Western Europe, America, and they visited there, and they saw a big difference, political as well as economic difference in the status of people and what kind of life they are living. And they were told कि your system is better than American system. They were told that you are living a better life than them. But when they visited there, they saw a very harsh reality that their lifestyle is certainly nowhere near to the American lifestyle and a lifestyle of a Western Europe, and they were very upset with that. They were really disappointed with that the government was somehow hoodwinking them. उनको झूठ बोला जा रहा था, उनको एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, उनको ये चीज़ रियलाइज हो चुका था, and that's why they were very very angry. They were up in arms. आगे बढ़ते हैं. Excessive expenditure on warfare, very very important point. During the Cold War, both the country had this intuition and gut feeling that they may go for a war, and that's why they were accumulating as much arms as they can, and they were competing with each other in the field of arms. Although Soviet Union was, not militarily not equal or not similar to America, but they were trying their level best to catch up with America. वो अमेरिका के बराबर जाए, इसलिए उन्होंने ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लग गए उस पर, और ऑब्वियसली पैसा तो लिमिटेड है. इफ यू विल spend more on military, obviously the rest of the thing will have to suffer. So they were expending more on military, and not only in military, on a space related thing also, and that's why the space fight was also in contest was also going on between America and Soviet Union. Now you will tell me in the comment section that who was the first astronaut who went to space and was sent by USSR, and they had to spend a lot of money in that all those things. Excessive expenditure of warfare and space related thing that really hit their economy a lot. And last but certainly not the least, very very important point, Gorbachev policy. And that Gorbachev policy is also the immediate cause. इसको immediate cause में भी count करेंगे, because ये हिंदी में बोलते हैं तत्कालिक कारण, जो बिल्कुल एकदम कोलैप्स होने से कुछ टाइम पहले ही हुआ, सबसे लास्ट में हुआ. वो पॉलिसी जो गोरबाचेव जो थे वहाँ के सेक्रेटरी थे, देन ही वाज आल्सो प्रेसिडेंट, और वो वहाँ पे रिफॉर्म करने के लिए दो पॉलिसी लाए, ग्लासनोस्ट एंड पेस्ट्रोइका. और
ग्लासनोस्ट का मतलब था एक तरह से ट्रांसपेरेंसी, पेरेस्ट्रोइका मतलब रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिस्टम, वॉट एवर प्रिवेलिंग. इट वॉज अ पॉजिटिव पॉलिसीज, बट समहाउ इट ऑल्सो बिकेम द रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन. तो अभी हम गोरबाचेव की पॉलिसी के बारे में मैं नहीं बताऊंगा. आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट, गोरबाचेव की पॉलिसी को लेकर एज वेल एज द आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन. अभी इतना ही रखिए ध्यान आप. इट वॉज ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी विच वॉज नीडेड इन द सिस्टम, एंड पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है restructuring the entire system. So although on paper these two policies were a very well intent policy that was really needed for the Soviet Union at that point in time, but why these policy itself became the रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. बट आज के लिए इतना ही ध्यान में रखेंगे आप. एंड आई होप कि आपको इस सारी जितने भी कॉजेज मैंने बताया उससे पहले सिस्टम जो मैंने समझाया, यू वेरी मच लाइक्ड इट, एंड समहाउ इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ बेटर मैनर. आई tried my level best to incorporate all the causes, and if there is anyone which I might have skipped, please do let me know about that. and इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो गोरबाचेव की पॉलिसीज पे बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो भी. और उसके बाद we will also talk about the outcome of the disintegration. ठीक है, तो in this video I think we should wrap up, and again I should not let you know, but as you know that the tradition goes, please do share, subscribe and like my channel, and do not forget to press the bell icon. Thank you so much. Have a good day.